Okay, so now let us start with the session. 65 students have joined yet. Okay, so in the previous lecture session, let me quickly go through. In today's tute, we had a revision of all the concepts till 5.5. So in this chapter, we have covered till register reference instructions. We have seen the different types of instructions, and we have covered till register reference instructions in detail, right? So now the next part is going through the remaining two types of instructions. Today we'll be studying memory reference instructions, but in your syllabus for your quiz, we will keep only till register reference instructions as informed to you earlier. Okay, so yes, if this is if you look at the index, we have covered this much, and register reference instructions are covered in this 5.5 itself. Okay, so today we'll be moving ahead with memory reference instructions. Now, quickly, let us recall what are memory reference instructions. In memory reference instructions, the opcode ranges from 0 to 6, right? The 15th most significant bit can either be 0 or 1. Let us quickly go and look at our instruction cycle, how to decide whether it is a memory reference instruction or not, and then we'll move ahead to all the different types of instructions. Okay, we'll see which are the different memory reference instructions. I'll not take much time. I'll quickly explain you memory reference instruction today. Yes, these are the instructions we'll be seeing. एक minute, huh? Okay, all of you have a look at this quickly. We have seen the register reference instructions. In that, we what was our common part? D7. Why? Because opcode was fixed 111. The most significant bit I was 0. Okay, so we had written D7 I dash, and the instruction was executed at time T3. So we're writing D7 I dash T3. And then which instruction to execute depends upon the bit. तो B11, B10, B9 उस हिसाब से हमने किया था. ठीक है? Now let us move on to this part, memory reference part. Okay, now here memory reference part में, see this input output instruction and register reference instruction, both these types of instructions take place at timing signal T3, right? Am I audible? Is everything visible? Is this PDF visible? Okay, हाँ, please keep responding. Otherwise, I feel कि मैं अकेले बोले जा रही हूँ. Yeah. So here, it was fixed that at timing signal T3, my input output or register reference instruction would take place, and I will reinitialize my sequence counter to 0 so that it generates T0 timing signal. Okay. But in this case, at time T3, what happens is actual effective address is stored in AR. Okay. If it is a direct addressing mode, in that case we don't do anything at time T3. But if it is an indirect addressing mode at T3, what we do? We transfer our effective address to AR. Okay. So when would our memory reference instruction start executing from? It starts from T4. अब यहाँ पे T4 नहीं लिखा है because it's not necessary that it would be completed in only a single timing signal. Okay, because we need some steps to execute one particular memory reference instruction. So it's not necessary कि T4 पे ही खत्म हो जाए. हाँ, there are some instruction which gets completed at timing signal T4 only. तो T4 पे ही वो memory reference instruction execute कर दो और SC को 0 कर दो. But some instructions would require more than one timing signal to execute. Okay, so one by one we'll be seeing all these instructions. First of all, when we want to start off with a memory reference instruction, मैं आपको quickly recall करवा देती हूँ. Here we do not have fixed D7, D0 कल एग्जाम है. Have you all recalled these things? What is D0 for? And D1 add, D2 load,
accumulator. This is in syllabus. हाँ, आपको पता होना चाहिए कि D0 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है, D6 तक. Okay, so this is and add load, then D3 load के बाद store accumulator, D4 branch unconditional यानी jumping वाला. Okay, function. D5 branch and store return address. This is actually a subroutine function. This is unconditional jumping from one location to another. Okay, and D6 is increment and skip if 0. ध्यान से एक एक इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे तो आपको ये D0 to D6 भी याद रह जाएगा. You will be remembering the sequence as well. Okay, so let us first start with the first instruction, that is AND instruction. When we say and किसके साथ करेंगे हम? We will be ANDing it to our accumulator. So in this instruction, what would happen? This instruction would carry out logical AND operation on the content which is present in accumulator, okay, and the memory word. Okay, memory में आप जो location आपने provide किया है वहाँ पे whatever content is present in the memory specified by address register, that content it will be ANDing it with accumulator. Okay, so what we will do here is how we will represent it in the form of RTL. D0 is our instruction. When would this instruction be carried out? हमने अभी देखा कि सारी memory reference instruction would start at timing signal T4. D0, D1 is for fetch. D2 is for decode. D3, sorry, I made a mistake. T0, T1 is for fetch. T2 is for decode. T3 is for storing effective address. And T4 is execution of our instruction. Okay, so D0 here indicates it's an AND instruction. तो AND करने के लिए हमें किसके साथ AND करना है? कंटेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है उसको किसके साथ करना है? accumulator के साथ. Fine. Now I cannot carry out any kind of operations directly to the memory. मैं मेमोरी के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ नहीं कर सकती. Any logical operation I cannot perform on the memory directly. So what I need to do is I need to fetch that data into data register. पहले हम क्या करेंगे? डेटा रजिस्टर में से मेमोरी कंटेंट स्टोर्ड एट एड्रेस रजिस्टर AR में जो भी डेटा है उस एड्रेस वाली वैल्यू का कंटेंट विल बी फेचिंग एंड स्टोरिंग इट टू अवर डेटा रजिस्टर. व्हाई? बिकॉज दिस DR, रिकॉल दैट बस सिंबल. एक्यूमुलेटर के साथ मुझे कुछ काम करना है तो DR का कंटेंट जाएगा एडर लॉजिक यूनिट के अंदर. फाइन. सो व्हाट डिड वी डू? वी ट्रांसफर्ड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू DR. Then again D0, T5. Look, now we need two timing signals. पहला timing signal में we just fetch the data and then we will carry out the actual operation on the accumulator, that and the content of your accumulator to the content of DR. DR में मैं मेमोरी से जो लेके आई उसको हम किसके साथ वापस एंड करेंगे? accumulator में जो डेटा है उसी के साथ आप उसको एंड करो. Understood? This is the AND symbol. And this is my instruction got executed. So once your instruction gets executed, what do we do? What do we do? Instruction execute हो जाने के बाद set the sequence counter to 0. PC को नहीं, sequence counter को. Right? We set the sequence counter to 0. Recall your previous instructions. रजिस्टर रेफरेंस, इनपुट आउटपुट वो वाली साइकिल देखो, उसके अंदर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड सेट SC to 0. सो वापस T0 जाएगा. T0 जब जाएगा तब फेच फेज स्टार्ट हो जाएगा. फेच फेज में आप PC को रेफर करते हो. ठीक है, तो वो PC हम इंक्रीमेंट वहीं पे कर रहे हैं. ओके, रिकॉल द फेच फेज. व्हाट डू वी डू इन फेच फेज? T0 T1 में क्या करते थे एक बार याद कर लो. ठीक है, चलो. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर. नाउ आफ्टर एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज add. Again this is addition to what? इसके साथ accumulator के साथ ही add होगा. Fine. So here also similar way we will be writing the RTL, but instead of D0 this is D1. It will start at timing signal T4. I cannot carry out any operation on memory, so I will have to take it to my data register. Okay. एंड D1 T5 पे क्या होगा? एडिंग प्रोसेस होगी.
Where will we add it to? We will add it with accumulator and store it to accumulator. Now, one important thing over here, when we are adding something to our, when we are carrying out any addition process, what happens is there are chances that carry may get generated, right? So where should we store our carry? Where will we store our carry? Yaad karo. Yes, in our extended flip-flop E. So in E, we will be storing our carry. Okay? Accumulator के अंदर आंसर आएगा. AC plus DR would be stored in AC only and my carry would be stored to E. What else will I have to do? अब क्या करना होगा? Yes, SC is 0. So first, second, total we are having 7 such instructions. Okay, चलो ये समझ में आ गया सबको. Shall I move ahead? And add are easy. Okay, fine. चलो next comes I will have to insert pages. नीचे चला गया. No issues. चलो let us start from here. Okay, the third instruction is LDA. What does LDA mean? Load to accumulator. Whatever is this instruction, what would it do? It would transfer the memory word specified by the effective address to accumulator. Okay, memory word, yani it is fetching something from the memory. Okay, what is it fetching? It is fetching the data which is stored at a particular effective address. हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ कोई भी task करने के लिए we are fetching the either operand or instruction or something from a specific location in the memory. Address register जो भी location बताता है उस location वाला content memory से we fetch. Fine. So this is what nothing but yes, fetching that content and storing, loading it to accumulator. Right? So let us quickly now, do we have any connection directly between memory and accumulator? Recall your bus वाला diagram. Memory का data अगर हम bus में transfer भी कर दे तो do we have an input to accumulator from bus? We do not have. So what will we have to do? ये याद रखना है accumulator में direct bus का content जाता है. We don't have that. No. Accumulator has only 3 inputs. Where would the input come from? पहले मुझे ये आंसर बताओ. एक्यूमुलेटर में इनपुट्स कहाँ से आएंगे? INPR, वेरी गुड. देन DR, okay, data register and AC. Yes. So we when we are said that we want to transfer the content of memory to accumulator, I cannot do it directly. So for that, what would we do? This is D2 load A. हमने D0 D1 देखा. This is D2 timing signal T4. What will we do? First of all, we will transfer the content from memory specified by the effective address to DR. And then what will we do? Now we will transfer the content from DR to AC. तो ये data load हो गया AC में, इधर आ गया, right? और कुछ करना होगा इसके बाद. Set the sequence counter to 0. Fine. So look, all these 3 instructions took how many timing signals to execute? 2 timing signals, T4, T5. Okay. Chalo, now moving ahead. STA. What is STA? Store AC. What does store AC mean?
store the content of accumulator to memory. Store content of accumulator, store AC to memory. चलो अब how to do this? Is it easy? This is D3. फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो, AC को आप बस में डाल सकते हो? Yes or no? Can you transfer the content of accumulator to bus? Is the output of AC connected to bus? Yes. Okay. Is the input of bus connected to memory? So is direct transfer possible? Yes, it's possible. So simply write M of AR to AC. Fine. मेरा काम हो गया. I stored the content of accumulator to memory and set the sequence counter to 0. So this instruction just got completed in a single timing signal T4. इसलिए वहां पे इंस्ट्रक्शन साइकिल में टाइमिंग सिग्नल स्पेसिफाई नहीं किया था. ठीक है, because some instructions take more than one timing signal to execute, some instructions take a single timing signal to execute. Okay, store accumulator clear. Directly transferring the content of AC to MAR and then set the sequence counter to 0. चलो नेक्स्ट, ये D3 हुआ. अब D4. D4 पे कौन सी है? 1. What is 1? ब्रांच अनकंडीशनल. यानी मुझे आई वांट टू चेंज माय लोकेशन. मुझे सपोज पीसी राइट नाउ इज पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ए वाले एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए. तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करनी है. व्हाट आई वांट टू डू इज अनकंडीशनली आई वांट टू गो एंड एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन. ओके, दीज आर माय इंस्ट्रक्शन. इसके बाद यही होगी, इसके बाद यही होगी. बट नो, नाउ आई वांट टू जंप टू दिस लोकेशन. सो व्हाट विल आई हैव टू डू? ये वाली लोकेशन जहां मुझे जंप करना है उसको कहाँ डालना पड़ेगा? पीसी में. If I specify the instruction in PC, then only I'll be able to execute it. What does PC store? Next instruction. But now what I want to execute, instead of next +1 की जगह मुझे कौन सी ये वाली instruction execute करनी है. Fine. So what I'll do is simply D4 T4. Yes. D4 is for 1. Okay. T4. Here what will we do? Simply PC के अंदर क्या डाल दो? AR का कंटेंट. AR में आपका इफेक्टिव एड्रेस आ गया है ना टाइमिंग सिग्नल T3 पे. Recall our instruction cycle. T3 में we are setting our we have our effective address which we want to execute, right? So here PC के अंदर store the address which is in AR and set the sequence counter to 0. So this instruction also got completed in one timing signal. Okay, so what would happen? The effective address from AR, it is transferred to PC. But ये सारे हम जो भी transfer लिख रहे हैं, right? How are they transferred? They are transferred through a common bus only. Okay. So if there is no direct connection, तो in that case हमने 2 steps में किया था. ठीक है? But here direct connection is possible. So we are just transferring the content of AR to PC directly in a single timing signal. Done. Shall I move ahead? चलो कौन कौन सी देखी हमने फटाफट. D0 was, first instruction was and. D1 was add. D2 load. D3 store. D4 very good. Load. A means what? Load content from memory to accumulator. Store means what? Store the content of accumulator to memory. ठीक है? चलो, now moving to a somewhat different type of instruction. BSA. Branch and save return address.
In this, what we will do, this is like your subroutine call. Okay, subroutine call means आप function call करते हो. So first of all, what happens? Suppose this is your program. Okay, and this is your function. When a function call takes place over here, what happens? You go and jump to this location. ओके यानी आपको इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे जो आपका फंक्शन सपोज लोकेशन इधर है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए राइट यू नीड टू Rajvi has written the instruction. Yes, Rajvi, can you explain the instruction? Chalo, give me a break. Rajvi, unmute yourself. Ma'am, हाँ, first we have to load the address and PC to address register. first And you that want to store content of PC to? address register. Okay. Then We have to load PC with the incremented address of AR. why? Explain this. ये आपने किया. Okay, first of all, whatever is an address, हम क्या कर रहे हैं कि एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास मुझे क्या है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो होगी ठीक है तो आपको उस लोकेशन पे जाना है इसलिए आपने क्या किया why did you store this PC to AR MAR Rajvi We have to store the return address now because then we have to go there after completing the routine. Okay, fine. So you want to go there after completing the function. आपको वापस यहाँ पे next line पे जाना है इसलिए आपने क्या किया उसको पहले MAR में स्टोर कर दिया फिर ये क्या किया PC AR+1 After completing the routine, we have to go to the next location from where we have left. Okay. Anyone else who would like to try to explain? These are the steps. MAR PC ये दोनों एक ही टाइमिंग सिग्नल पे है हाँ. Anyone who would like to explain? No one? Chalo, let us see. I'll take example from the book itself. Okay. Suppose this instruction is at 20. लोकेशन 20 पे एक ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे बाजू में एड्रेस स्पेसिफाई इफेक्टिव एड्रेस स्पेसिफाई किया है 135 दिस इज 0 इट मींस डायरेक्ट 135 पे आपका आपका लोकेशन स्पेसिफाइड दिस एड्रेस इज स्पेसिफाइड ओके फॉर ब्रांचिंग टू अ पर्टिकुलर लोकेशन नाउ what would my PC have now PC would be having 21 क्यों क्योंकि PC के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी वाले इंस्ट्रक्शन 20th लोकेशन पे है PC वाली इंस्ट्रक्शन PC अब PC would be having 21 okay what is this 135 where would it be stored it is your it is stored in your address register 135 क्योंकि वो इफेक्टिव एड्रेस है आपका ठीक है तो एड्रेस रजिस्टर 135 ये है आपका सब रूटीन यहाँ पे इट मींस दिस इज योर लोकेशन ऑफ योर फंक्शन ओके 136 से ये आपका पूरा सब रूटीन है योर फंक्शन इज ओवर हियर ओके इतना पता चला दिस इज माय एग्जांपल राइट नाउ when this instruction BSA branch and skip return address is executed what would happen m of 135 के अंदर हमने ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी कि what we need to do m of AR के अंदर PC को स्टोर करो यानी once this instruction gets executed ये BSA वाली एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा this is your PC this is your it is having next instruction ठीक है तो हम क्या करवा रहे हैं ये जो MAR है लोकेशन 135 इसमें हम PC स्टोर कर देंगे अभी ठीक है देन माई सब रूटीन अभी मेरा PC की वैल्यू में क्या होगा PC के अंदर हमने क्या किया था AR+1 why because if my PC is 136 then only this subroutine would get executed
राइट, हमारा सब रूटीन इधर है ना, अपना फंक्शन इधर है, राइट। सो पीसी के अंदर हमने क्या किया, AR+1 स्टोर करवाया। अगर आप AR+1 नहीं करोगे तो वो सब रूटीन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज माई सब रूटीन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वुड बी ओवर हियर। मेरे फंक्शन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, 136 लोकेशन पे होगी, ठीक है। सो व्हाट डिड वी डू, वी चेंज द लोकेशन ऑफ पीसी टू AR+1। और यहाँ पे MAR में हमने पीसी क्यों डाला, बिकॉज पीसी अभी जो मेरी एग्जीक्यूट, पीसी के प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी मुझे एग्जीक्यूट करनी है 21st, उसको मुझे कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो दैट वी आर स्टोर्ड ओवर हियर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज योर फंक्शन कॉल, BSA इज फंक्शन कॉल। और जब भी फंक्शन रिटर्न होगा, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, यहाँ पे हर एक सब रूटीन के नीचे क्या होगा, लास्ट इंस्ट्रक्शन वुड बी दिस, ब्रांच अनकंडीशनल टू AR। यहाँ पे जो भी एड्रेस रजिस्टर में आपका 135 है वो। नाउ हियर आई हैव रिटन 1। व्हाट डज दिस 1 मीन, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ब्रांच अनकंडीशनल, यहाँ पे जो 135 है दैट इज नॉट योर इफेक्टिव एड्रेस। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो एड्रेस है 21, उस जगह पे जंप करेगा, राइट। इट विल नॉट जंप टू 135। वेयर वुड इट जंप टू, इट वुड जंप टू लोकेशन 21। तो हो गया मेरा सब रूटीन पूरा एग्जीक्यूट हो गया। एंड रिटर्न स्टेटमेंट में वेयर डिड इट टेक बैक टू, इट टुक बैक द इंस्ट्रक्शन टू दिस। Did you understand how did this work out? So what we need to do in this branch, so ये जो पहले हुआ तो हमने क्या किया, m of 135 पे 21 स्टोर हुआ, एंड पीसी के अंदर 135 plus 1, that is 136 got stored in program counter. Now as 136 was there in program counter, आपका सब रूटीन, आपकी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया उसने। And then again PC would keep incrementing and it would execute all the instructions which are specified over here. And then as and when it received this instruction, branch unconditional to this particular location, तो उसने क्या किया, 135 वाले लोकेशन पे हमने जो प्रोग्राम काउंटर का पुराना एड्रेस स्टोर किया था, at that address it would go and execute the next instruction, right? So this is branch and save return address. So what are the steps involved over here? What we need to do, we here, this is my D5, right? Fifth instruction है D5 T4 पे what would happen, M of AR, in M of AR will be storing PC, right? We will be incrementing the content of AR की increment वाली पिन ऑन करके एक वैल्यू उसकी बढ़ा दो, fine. And at D5 T5 what we will do, PC के अंदर ये incremented AR की वैल्यू डाल दो, ठीक है। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर दिस 2 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका फंक्शन रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। योर सब रूटीन वुड बी रिटर्न एंड देन सेट द काउंटर टू 0, right? Did you understand? This is somewhat like you need to understand the concept, then you will be able to write this instruction. ऊपर वाली हमने 4 देखी, D0 D1 D2 D3 D4, all those are very easy, just from the name you are able to make out. इसके अंदर you have to apply your logic कि किस तरह से हम रिटर्न एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने वो फिगर के थ्रू समझा। हियर दिस स्टेप, वहां पे मैंने सीधा लिख दिया था PC इक्वल्स टू AR+1, but we for our address register we have increment pin, okay. So that is incremented over here, and that incremented value only, because direct हम इधर एडिशन करके फिर नहीं डालेंगे, that incremented value only we are transferring to PC, तो PC के अंदर AR+1 चला गया, fine. So this was D5, that is branch and save return address. And now moving to the last instruction, इसमें कोई डाउट, D5 anyone, any doubt? मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 स्टूडेंट ही मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? और अभी हमने इतना भले ये सिलेबस में नहीं है
the register transfer language for each and every instruction, सारे sequence of micro operation. But अभी ध्यान दोगे तो आपको ये sequence याद रह जाएगी कि हमने किस sequence में पढ़ा. We started off with end, तो जैसे ही आपको वो दिखेगा वो D0 का कोड, तो आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये तो end instruction है. ठीक है. So this is also going to be helpful in tomorrow's quiz. So don't think कि हाँ अभी ध्यान नहीं देना है memory reference में. Okay. चलो, moving to the last instruction, ISZ. What is ISZ? Increment and skip if 0. Now what to increment? Incrementing the content of memory to which your address is pointing to, AR is pointing to. ठीक है, मुझे मेमोरी का कंटेंट इंक्रीमेंट करना है. इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, आई नीड टू इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ मेमोरी, यानी MAR वाली जो भी जगह ये जो वाला कंटेंट है, AR जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो वाले कंटेंट को मुझे इंक्रीमेंट करना है. एंड देन इफ दिस वैल्यू is 0, I want to skip to the next instruction. I want to skip the next instruction. Okay. So now this is your D6. Now if I want to carry out increment operation on memory, I cannot do. हमने अभी आगे पढ़ा कि मेमोरी के अंदर मैं सीधा एंड ऐड प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to fetch the content to DR. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेमोरी से मुझे जो कंटेंट को इंक्रीमेंट करना है, I'll get it back to DR. I'll bring it to DR. फिर मैं क्या करूंगी? DR को इंक्रीमेंट कर सकते हैं हम? Yes, I can increment DR. राइट, DR को इंक्रीमेंट कर दो, यानी ये वाला कंटेंट इंक्रीमेंट हो गया. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस ये वाला जो मैंने इंक्रीमेंट किया मेमोरी वाला कंटेंट, वापस मुझे उसको मेमोरी में डालना पड़ेगा. राइट. So how would I do? Transfer the content of DR to memory. Right? इतना पता चला सबको? ये अभी सिर्फ इंक्रीमेंट पार्ट है. I cannot increment the content of memory directly, so I first transferred it to DR. DR में increment possible है, so you are incremented the content of DR by 1. Then what did you do? जो मेरा DR के अंदर incremented values है, I transfer back that content to the memory. Okay. Or in this instruction it is written skip if 0. Right? So यहाँ पे along with this we will also check the content कि if DR 0 है, if DR is 0, तो मुझे क्या करना है? skip करना है. How would I skip an instruction? How can an instruction be skipped? Increment the program counter. Yes. PC equals to PC plus 1. इतना करने के बाद अपने सीक्वेंस काउंटर को वापस रीइनिशियलाइज करना. Understood? All the memory reference instructions. Okay, fine. So this was skip wala part was easy. Check DR. If DR is 0, increment the program counter. Okay. Now let me quickly go through these contents in the book. Let us see if we have covered everything. ये इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा, उसके बाद हमने रजिस्टर रेफरेंस देख लिए. अब मेमोरी रेफरेंस. हाँ, इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं. The ones which we studied. Timing signals are not mentioned over here. This is just a summary, that is symbolic description of each and every instruction. ठीक है. चलो, and to accumulator, these two steps. पहले DR में डालो, फिर AND करो, and then SC to 0. Add to accumulator, transfer the content to DR, add it to accumulator, and again this is important, don't forget your carry. Ma'am, Yes. ma'am, in book, the content of M of AR is directly incremented, not being stored in DR register. Which instruction are you talking about? Last IS set.
increment and skip F0. ऊपर आपने दिखाया ना मैम टेबल. Ma'am, in this it is written, but in the above table it was directly That is just incremented. डिस्क्रिप्शन कि कौन क्या क्या करना पड़ेगा आपको. इट्स नॉट डिटेल्ड कि कौन से टाइमिंग सिग्नल पे कौन सा ऑपरेशन होता है. इसमें सिर्फ ऑपरेशन बताया है कि ये ऑपरेशन कहाँ है. हाँ, यहाँ पे इधर सीधा MAR is MAR plus 1. If MAR plus 1 is 0, then PC is PC plus 1. Yes, but see, generally, whenever we do not carry out any operation on memory. Memory पे सिर्फ read and write operation ही होते हैं. If you look at your bus, okay, it has only two signals, read and write. So I cannot carry out plus minus operation over there. I cannot carry out increment decrement operation over there. So if I want to carry out any operation on the content of the memory, I need to take it to some register through which I can carry out. तो आप DR में अगर उसको ले आओ तो आप इंक्रीमेंट पिन के थ्रू भी डेटा को इंक्रीमेंट कर सकते हो. आप उसको एडर एंड लॉजिक यूनिट में भी +1 करवा सकते हो. ठीक है. सो वी डू नॉट जनरली, यहाँ पे सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है समरी में, but generally we do it like this. We transfer the content to DR. Okay. Okay, ma'am. Okay, so the first three instructions we're taking two signals and add or load two timing signals to execute. Then this store में कुछ नहीं करना है, direct bus के through data transfer हो जाएगा. For branch unconditional also, simply store the AR content to PC. Branch and save return address was something you need to understand and write the instructions. Okay, पहले PC का content AR में डाल दो, AR को increment कर दो. Then store AR to PC so that your subroutine वाली location gets executed. Fine, and then initialize your sequence, reinitialize your sequence counter. And the last instruction was increment and skip F0, where we first take the content of memory to DR, then DR plus 1. Once our data is incremented, we will store it back to memory, and then we will check if DR is 0, we will skip the next instruction and change the value of PC to PC plus 1. Okay, so this was all about memory reference instruction. ये एक control flowchart दिया हुआ है. ठीक है, ये सारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एक फ्लोचार्ट के थ्रू एक्सप्लेन की है. जैसे हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में T0, T1, T2 का अलग अलग फ्लोचार्ट दिखाया था, उसी तरह से here for AND operation, first this thing takes place, then this thing takes place. तो एक बार आप ये फ्लोचार्ट ध्यान रख अच्छे से आपको पता चल जाएगा तो it would be easy for you to memorize these things. ठीक है. और मेमोराइज करने की जगह इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू विल बी एबल टू राइट दिस RTL instructions, your micro operations for carrying out any particular instruction in the form of RTL on your own. Clear? तो यहाँ पे देख लो सारी इंस्ट्रक्शन, ये 7 इंस्ट्रक्शंस which we studied is specified. So ISZ takes 3 timing signals, T4, T5, T6 पे खत्म होती है. ठीक है. ये तीनों है STI, STA, 1 and BSA would take a single timing signal to execute. Remaining ये तीनों would take 2 timing signals to execute. नहीं, यहाँ पे 2 है. ठीक है, BSA में 2. Okay, so this is all about memory reference instructions. So in the next class, we'll be seeing input, output and interrupt. बाकी है. Okay, so now if you have any doubts in the concepts that we have studied till now, you can ask me.